chamber drama, how difficult it is. Ankur had asked. I want to ask the two young actors also, Zahan and Aditya, because it's only very restricted moment in one where the cameras are very close on your face. So how challenging was that, as actors? So first of all, I also went into jumping in the deep end with Hansal sir because he's made films about characters across a long period of time. Scam, Shahid, Aligarh, just stories about someone's life. So you get to spend Mehta, you get to spend time with them in many many scenarios. I thought, wow, meditation on character filmmaker, it will be amazing. पता चला एक रात की कहानी है. उसमें character के पास उतनी ही opportunity होती है. So it was a complete reversal of even our expectation and I think Hansal sir's attempt also to say, nahi, we will explore how do you create a character within such a constriction. How do we explore this one single location and just inhabit it? It was amazing because one night we were shooting, it was actually the anniversary of the attack and we overlapped with that. And I found myself just getting lost in thought thinking that how fortunate are we that we are in a position where we are safe, we are allowed to, through our art, through our craft, communicate such a story, but people have gone through this for real. This has happened to people, this has affected people, this is a tremendous privilege to be able to communicate that fact and it's not lost on any of us. So we know that it's a very sensitive thing, but I just hope that that intensity that you feel, like Hansal sir said, when you sit in an audience and what Ankur said is that you feel like you are as much a participant in this event as an audience member. Like I was telling Ankur, very edgy. So, and that is the approach, and that's again the challenge that Hansal sir said, and we managed to all submit to that. And in 23 short days of shoot, we've given you a 2-hour movie, so I hope that, somehow we've managed. Aditya, would you like to add? Just to add to what Zahan is saying, in terms of the process, we shot chronologically as he mentioned, but also it was this one location. We were in a COVID bubble. It was all of us together. It was a community, as you say, off the pitch and on the pitch. Because in the space itself, also you had all the actors present. All the actors that are present throughout the film in the restaurant. Each one was present there. Each one was willing to give 100%. So it was almost like you're stepping onto a live stage and you're living those moments, which made it all the more visceral. And then the idea of sort of the fact that it coincided with the anniversary of the attack itself. All of those things, I think it helped us sort of bring it to life in a manner that I don't think we would have been able to otherwise. So there are, I suppose, advantages of telling a long drawn out story over a long period of time over different locations. But the advantages in terms of process of doing this chamber drama chronologically while having everyone present at all times. Wherever you turn the camera, there is life. So that aspect just made it so much, I don't want to say easier, but it helped us sort of bring it to life, I guess, in a more effective manner. Just one more question for Hansal, sir. We're reading about these two victims' mothers filing an appeal challenging the release of the film. So what happened? See, I always maintained one thing, that we have put our faith in the judiciary. They filed an appeal. We have put our faith in the judiciary. We have done whatever is well within our rights, whatever is correct. We made the film with sensitivity. We have never made any rebuttal or anything in the press. The people who are talking about right to privacy have gone to the press over and over again. They have had press conferences, we have not. And we would like to maintain the dignity of the victims and our film at all times. So beyond that, I will not say anything. There are grieving families, and we have dealt with it with the maximum empathy possible. All the empathy that is there in our heart. The intention of the film is not to profit from anybody's misery. If I had to profit, I would have, after Scam, jumped into something else or cast his more illustrious cousins in the film.
Zahan, my question to आप बहुत खुश नसीब हैं कि आप कपूर फैमिली में बिलोंग करते हैं। आपने अपने दादाजी की कौन सी फिल्में देखी और आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? Rapid fire. आई एम वेरी बैड विथ फेवरेट्स। मुझे फेवरेट एक चुनना बहुत मुश्किल होता है। आई रियली थिंक दादाजी की जो करियर है जो थी, इन टर्म्स ऑफ हाउ ही डिड कमर्शियल सिनेमा, इंटरनेशनल सिनेमा, फिर प्रोड्यूस किए थे अपने फिल्म वालास के, दैट शोज हिज सेंसिटिविटी टू, इट इज़ नॉट वन वर्सेस द अदर। ऐसा नहीं है कि वन पिक्चर इज बेटर देन द अदर। ऐसा नहीं है कि कमर्शियल सिनेमा में दम है क्योंकि ऑडियंस जाती है। ऐसा नहीं है कि आर्ट सिनेमा में या आर्ट हाउस या जो भी कहो, पैरेलल सिनेमा या ऑल्टरनेटिव सिनेमा, उसमें हकीकत है, रियलिटी होती है, वो सारी चीज़ें होती है, ग्रिट है, तो दैट इज़ बेटर। नहीं, वो बात ही नहीं है। इफ़ वी कैन सर्व द स्टोरी, इफ़ वी कैन पार्टिसिपेट and have the opportunity to participate with good filmmakers and good storytellers, every story will find its version, find its audience, hopefully. So the idea is just to hopefully, if I can, is learn from that teaching and carry forward and participate with my best intention, with my best effort. Hansal ji, You will be watching many more films of him. I love watching films, तो मैं सारी पिक्चर्स देखता हूँ. I watch all kinds of cinema and I will continue to watch because I love it. His grandfather has been an inspiration for an entire generation, particularly for the films that he produced. Yes. You know, at a time when there was so much of, you know, when he himself was in all those big commercial blockbusters with Mr. Bachchan, he made films like Junoon, 36 Chaurangi Lane. I mean, those films, so that's what, see this argument of the box office versus कि आपको 36 चौरंगी लेन का बॉक्स ऑफिस मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, बट द फिल्म इज रिमेंबर्ड, यू नो. सो अल्टीमेटली व्हाट यू डू, व्हाट शशि कपूर इज लेफ्ट बिहाइंड इज अ लेगेसी दैट इज वे बियॉन्ड व्हाट द फिल्म डिड ऑन अ वीकेंड. एंड वही है, फिल्म्स लीव बिहाइंड मच मोर देन दैट. स्टोरीज रेजोनेट फार बियॉन्ड जो एक वो गिनती, मतलब इन्वेस्टर्स पे जो है ना, जो ट्रेडिंग करते हैं उन पे छोड़ दीजिए. इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है हंसल जी, अगर आप भावना शर्मा ना भारत जी, अगर आपके सिनेमा की बात करें, अभी आपने 36 चौरंगी लेन और उनकी बात की, तो आपका सिनेमा भी ऐसा ही है जो चौंकाता है हर बार. और आपने भी कभी आप जिस मुकाम पे हैं वहाँ पर आप बहुत सीधी सादी अच्छी कमर्शियल फिल्म बना सकते हैं, लेकिन आपकी जिद हमेशा रहती है आप एक नया सब्जेक्ट, चैलेंजिंग सब्जेक्ट, थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट को कमर्शियल बनाने की जिद आपने हमेशा की और कई बार आप सक्सेसफुल भी रहे. लेकिन क्या बॉक्स ऑफिस के आंकड़े आपको कभी डराए? नहीं, मुझे डर बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों का, जो ऑडियंस के लोग जो उसका हवा बनाते हैं, मुझे डर उससे है कि वो फिल्म के मेरिट्स को छोड़कर वो बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से उनको की जो तुलना होती है ना, बॉक्स ऑफिस के नंबर से फिल्म की क्वालिटी की, उस तुलना से मुझे डर से ज़्यादा मुझे उस चीज़ से मुझे घृणा है उस चीज़ की. और मुझे देखिए, मैं भी कमर्शियल फिल्म ही बनाता हूँ. कमर्शियल फिल्म क्या होती है मेरे लिए कमर्शियल फिल्म वो होती है जिसमें फिल्म के इन्वेस्टर्स पैसे गंवाते नहीं है द लॉन्ग रन. तो मेरा मानना है कि मेरी फिल्म्स पैसे गंवाती नहीं है. हाँ, वो मतलब आप उसमें मेरे बड़े पोस्टर्स नहीं देखेंगे कि 300 करोड़ 250 करोड़, वो नहीं देखेंगे और मुझे कोई गिला नहीं है उसका. लेकिन आप अगर 10 साल बाद शाहिद को याद कर सकते हो, अगर 20 साल बाद कोई कहे कि इन्होंने अलीगढ़ बनाई थी, तो शायद मैंने अपना जो काम था, हर आदमी फिल्म मेकर अलग कारण से बनता है, मैं इसलिए बना था कि मुझे याद रखा जाए. मेरे जाने के बाद ना सिर्फ वसीयत में मैं इन कहानियों को छोड़ सकता हूँ. पैसे तो है नहीं उतने मेरे पास. हंसल जी,
इस पिक्चर में जैसे कि आपने दिखाया ढाका में आतंकी हमला होता है, बचाया गया है, तो एक धर्म विशेष को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं कि बच्चों को मिसगाइड कर दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो इस रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो यहाँ आदित्य के कैरेक्टर में आपने कितनी उन चीज़ों को इन्वॉल्व किया है जो आने वाले बच्चों को, नई पीढ़ी को रोक सकेगा और धर्म के नाम पे जो उन्हें मिसगाइड किया जाता है वो नहीं होगा? देखिए, कोशिश हमारी ये रहती है कि फिल्म के ज़रिए मैं आपके अंदर एक सोच खड़ी कर सकता हूँ, सोच पैदा कर सकता हूँ कि आप इस मुद्दे के बारे में सोचें। कहानी आपके अंदर वो थॉट प्रोवोक करती है, उसके बाद हमें एक कि वो इंसानियत के बारे में आप सोचें। इस फिल्म में जो मैंने दिखाया है, तो मैं हमेशा फिल्म को ना दूर से, थोड़ी दूर से देखता हूँ। मैं फिल्म को, कहानी को जैसा है वैसे रखता हूँ। मैंने ना इसमें आदित्य के कैरेक्टर को जज किया है, ना ही मैंने जहान के कैरेक्टर को जज किया है कि ये महान है और ये विलेन है। मेरे लिए एंटेगोनिस्ट प्रोटेगोनिस्ट वाला जो एक वो है अंतर, वो नहीं है कोई। वो इंसान दोनों है, दोनों के कंपल्जन्स अलग है। और क्या मुझे आदित्य के कैरेक्टर के कंपल्जन्स, क्या मुझे वो समझ में आते हैं? नहीं, मुझे उसका गुस्सा समझ में आता है, उसकी नाराज़गी मुझे समझ में आती है, लेकिन जिस जरिए से उस नाराज़गी को व्यक्त करता है वो मुझे गलत लगता है। और वही हुआ है, मतलब फिल्म में इनका एक आर्गुमेंट होता है, उसमें इसके कैरेक्टर ने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि गलत हो रहा है हमारे साथ दुनिया में, गलत हो रहा है, लेकिन गलत जो होता है उसका मुकाबला हम क्या लोगों को मार के हिंसा से करेंगे? वो मतलब किस धर्म ने हमको ये सिखाया है कि नाइंसाफ़ी का मुकाबला हिंसा से करोगे, मासूम जानों को लेकर आप नाइंसाफ़ी का मुकाबला करोगे? जहाँ बांग्लादेश में जाना और फराज के फैमिली से मिलना, कैसा एक्सपीरियंस था? आप दोनों से सुनना चाहते हैं। हंसल सर, आपसे बहुत मूविंग था एक्सपीरियंस। मतलब ढाका जाना ही अपने आप में, मतलब उम्मीद करता हूँ कि दोबारा हम जाएं, क्योंकि वहाँ सबको मिलकर एक तो बहुत मूव हुए थे। वहाँ की वो जो कैफ़े के पास हम गए थे, कैफ़े को भी दूर से देखा, उसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी, तो हमने दूर से देखा था। वहाँ कुछ सर्वाइवर्स को भी हम मिले थे। लेकिन और एक चीज़ थी वहाँ ढाका जाकर ना, हम जितने दिन थे, खाना बहुत बढ़िया था। और हमारी उम्मीद यह है कि हम कभी दोबारा जाए वहाँ और खाना खाएं, क्योंकि ये भी फूडी है, इसे भी खाना बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा रिसर्च से थोड़ा टाइम निकाल के हम दोनों बाहर जाके मार्केट में कुछ खाना खाएं। हाँ, ढाका बहुत कमाल का शहर है। हम गए थे, जिनसे भी हम मिले थे सब बहुत अच्छे से मुलाकात हुई। खाना बहुत अच्छा है, लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है ऑनेस्टली, हम सब एक लोग ही हैं। ऐसा भी बॉर्डर खींचा गया है और हम ये हैं आप वो हैं, बट मुझे काफ़ी एक जैसा लगा। तो बिल्कुल उम्मीद यही है कि हम वापस जाएं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी कहानी, उन्होंने अपनी कहानी हमें दी बनाने के लिए। और होपफुली मैं चाहता हूँ कि हर जगह, जैसे हंसल सर चाह रहे हैं, हर देश में कोई इससे रिलेट कर पाए। और ये एक यूथ की आवाज़ है, एक यूथ का एक संघर्ष है इसमें, और एक वार्तालाप है, उस पर एक चर्चा होता है इसमें। तो होपफुली वी कैन रीच बियॉन्ड। और ये एक अच्छी बात है कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, हम एक दूसरे के का दर्द को देख सकते हैं, उनका सुख देख सकते हैं और बांट भी सकते हैं। मिले थे उनसे, फैमिली से, फराज के? हम काफ़ी लोगों से मिले थे, उन्होंने अलग अलग लोगों से, हंसल सर के साथ से, तो उसकी फैमिली से भी मिले थे और they were very sweet and kind and generous. So we can only return that favor hopefully, and by doing honest work. तो वो हमारी जिम्मेदारी है और I hope हमने पूरी की. Hello, this is Raj from Sanskrit here. Hansal sir, I like to ask you, what's the meaning of this word Faraaz? Faraaz actually is the overall
theme of the film. It is not only a character's name. Faraaz means standing tall, someone who stands tall. And I think ये जो अभी हम जिस समय में हम जी रहे हैं, जो हम दुनिया में एक समय देख रहे हैं जहाँ there's bigotry, there's a lot of bigotry, we are polarized more than ever before. We are divided. We are one world, yet we are so divided. We are united by the internet. We are no longer कि इस country से यहाँ से वहाँ से हम सब we are united by this small device. But we are so divided. We have put people in boxes. So I think it is time for people like us to stand tall, to be what this band is saying. If we are Faraaz, this band is the spirit of the film. If we are all Faraaz, and that doesn't mean the character. It means that we are standing tall. कि अगर है नफरत फैलाने वाले अगर 10 लोग हैं, तो 1000 लोग हैं जो फराज बन सकते हैं. मेरा सवाल आप सभी के One at a time. Sorry, please go ahead. The one in yellow shirt. आपने जैसा कि आपने बड़े की बहुत ही ऐसी फिल्म हमको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है आपके बारे में और मतलब कि ऐसा वेदन आपको सबसे ज़्यादा अच्छी फिल्म माय गॉड ज़हान आपसे भी ज़्यादा अच्छी कि करीना और से आपको ये क्या है Zahan, you want to answer that? तो जैसे जहान ने कहा अपने दादाजी के बारे में, आई थिंक फेवरेट चुनना तो बड़ा मुश्किल होता है और शशि कपूर जी ने भी और पिताजी ने भी बहुत सारी पिक्चरें की है, तो उनमें से एक चुनना तो बड़ा मुश्किल होता है. खैर बहुत सारे पिक्चरें हैं जिसे मुझे बहुत पसंद है. आई वुड से इन द रीसेंट पास्ट ओए लकी लकी हो एक ऐसी पिक्चर है जो जिसमें इन अ वे ही इज प्लेइंग अ विलेन बट इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ फादर फॉर द कैरेक्टर ऑफ लकी. तो आई थिंक इन दैट सेंस मुझे वो वाली पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. एंड गोइंग बैक टू हंसल सर's पॉइंट, जो बॉक्स ऑफिस की बात हो रही थी, if you look at Oe Lucky, it had released at a time that that there was a big attack in Bombay at the same time. तो आप बॉक्स ऑफिस के आंकड़े देखेंगे तो it was not much, but it still lives on in our memory. It's still a film that's very alive, that's great to watch. It holds up, even to this day. So I think वो एक पिक्चर होगी जो Please request people to keep the questions focused on the film, please. मेरा सवाल आप तीनों के लिए है. फिल्म के लिए बजट बहुत ही मायने रखता है. वैसे ही 2023 की शुरुआत हो गई है. बॉलीवुड के लिए बजट से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? बजट से हमने कभी उम्मीद नहीं की है. बजट से मैं 30 साल से हूँ और मतलब ये सवाल हमें पूछा जाता है और मतलब ये सवाल किसी बेतुका सवाल है कि हमें ना कुछ मिलता है ना कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं. मुझे मतलब कोई उम्मीद नहीं. इस फिल्म में हीरोइन के बारे में कुछ कहिए. Sorry. Hi, Aditya, my question's for you. I think Ankur also mentioned that yours was a very difficult character to get into. Of course, there's he is violent, of course, but there's also a bit of humanity that peeks through every once in a while. How was the process of you getting into this character? Was it all in the writing, or did you have to do any special research? Did you have to meditate? I don't know. Yeah, so I mean, look, I think to get the opportunity to play this part, first of all, I am incredibly grateful to Hansal sir because when I read the script, my first instinct was, how the hell am I going to do this, and to sort of, I understood that responsibility the moment I read the story, and yes, we did put in a lot of work. We prepared hard for it. All of us, we did readings together. Hansal sir was always present in those readings. He was always happy to answer our questions. Always happy to sort of. इमरजेंसी का any emergency किसी को please get that shut down.
फराज की जरूरत है. Aditya, please continue. So yeah, so You have silence in the back, please. I think बहुत लोग बात कर रहे हैं. उनका जवाब सुन रहे हैं. So as I was saying, we did these readings. Hansal sir was always around to sort of guide us, shepherd us in the right direction. We had an associate of sirs from back in the day, Ikrar Bhai, who was always present with us to sort of help us with the nuances of whether with the religious aspects. There are, if you've seen the film, there are sort of a lot of things that we not just that we speak about, but we also recite from the Quran, and to sort of make sure that we're doing it in as authentic a manner as possible, so that we're not sticking out. I think those were responsibilities that all of us were very aware of. So yes, there was a lot of preparation, there was a lot of research. I, as an actor myself, I do enjoy preparing for a part. I feel like the more I know, the more solid ground I'm standing on when we go on set. So then then of course you forget all of that, and then you sort of completely surrender to the director. And so yeah, I mean, to answer your question, there was a lot of that, and I found it incredibly enlightening, not just for the part, but also understanding humanity. Trying to understand what goes into radicalism, how it works as a machinery, how it works on a personal level for these young, in many cases, boys. It was a journey of discovery, and I am, terribly grateful that I could sort of go through it with the guidance of Hansal sir, and to be able to work. And I must say that Ikhlaq, so who was an associate of mine when I began my career. He was already, a director, and my early days I learned a lot from him. Oh, yeah. So on this film I called him. I called Ikhlaq bhai. I told him that you need to train the boys, and so a lot of the nuances. One of the screenings, I think Rumi Jafri, he said कि तलफ़ुज़ बहुत अच्छे हैं. So that तलफ़ुज़ is a result of the training. They prepared. I mean, to remember these lengthy surahs was, lengthy passages, verses from the Quran Sharif. I think hats off to their perseverance. It's not only them, all the boys, all the boys, even the girls, Resham, Palak, and the boys, all of them had trained. They trained together, they prayed together, they recited verses together, and they remembered the verses and the meanings. Uski maine bhi jante hain, which are creditable. So more than the workshop, one part of the workshop was their entire indoctrination, so to say, into the understanding Islam as a religion. And I think from that we also learned, some of the messages that come out in the film are from what we understood from those classes. That no, the religion does not preach violence. Where did this violence come from? This is a way of life that it is telling you. How it is showing you. It is telling you stories about the way you can lead your life, and suddenly you have interpreted it to unleash violence. How? And just to add to what Sir is saying, as young actors, to have the guidance of Hansal sir is just so comforting, because you can explore, you can express yourself, and if you're not going in the right direction, he is on hand because he knows what he is doing. He's been doing it for a very long time. In the same vein, to have somebody like Ikhlaq bhai present, whenever you have a question, if you feel like you're going, if you feel like you may be doing it right, or you're expressing yourself to the fullest, he's always at hand to sort of be like, there's that pronunciation, there's this aspect, there's this meaning that you're maybe not able to bring out as yet, so you work towards that. And there were moments that, we had questions about how do you pronounce this line exactly, this sentence in the surah, and he would have his associates in terms of, in the neighborhood mosque,
who would sort of, send us the voice note of the correct pronunciation. So we were very mindful of that, and, we sort of treated it with the care that hopefully, one should. The last question, we'll be wrapping up now. Okay, thank you everyone for joining us.